Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. So this is part 5 of Series 1 2021 Current Affairs series. Talking about Insight SSB app, it is available on Google Play Store. So please download it via link available in the description box. Also, if you're using any Apple device, you can use Class Plus app for the same and use a code XVVEL to use Insight SSB on any Apple device. Talking about Instagram and Telegram, we are available on both of these platforms. So please make sure that you go and follow us there as we inseminate a lot of important information on both of these platforms and we stay in regular touch with our students on both of these platforms. Now, moving on with the important area that is the current affairs. So the first question is Swamitwa scheme that has been seen in news recently is related to what? Talking about Swamitwa, the full form for the same is Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in the Village Areas. Okay, so that is the full form of Swamitwa. It was launched by Prime Minister on the National Panchayati Raj Day. Now, talking about National Panchayati Raj Day, it was celebrated on April 24th, 2020. So, on this date, it was released and there are total 6 state beneficiaries and almost 1 lakh people that it will be covering. The 6 states that we talk about are UP, Haryana, Maharashtra, MP, that is Madhya Pradesh, Uttarakhand, and Karnataka. In this, the physical copies of property cards will be given to the beneficiaries. Also, there will be proper drone survey of the land so that if there is a rural area, we can easily find out that which place is owned by which owner. And this will help in resolving a lot of issues, be it the property issues. It will also give them help to apply for loans. It will also help in proper revenue collection. And rural mapping will also help in acknowledging that this land is of which person and will help in giving the property card to the beneficiaries. Okay. And talking about the portal that is e-Gram Swaraj, this is the portal that has been created for monitoring and to account whatever information has been collected and has been uploaded on website. So the answer for the same will be A, that is survey all rural properties using improved technology. Talking about improved technology means drones. Okay. सो दिस इज द मेन स्कीम और इसके ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं. प्लीज रिमेंबर इट थॉरली. काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी 2 that was test fired by Defense Research and Development Organization, which is also known as DRDO, belongs to which category of equipment? So when we talk about Prithvi 2, it has been test fired from the eastern coast of Odisha, that is Balasore. Okay, please remember the place also. कई बार ये भी पूछ लेते हैं from which place it was test fired. तो basically दो जो पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो टेस्ट फायर की गई थी and it was a very successful test fire. Okay, now talking about the type of missile it is actually SRBM. SRBM जो है that is surface to surface शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सरफेस टू सरफेस है. ठीक है, शॉर्ट रेंज क्यों है? बिकॉज इसकी सिर्फ 250 किलोमीटर्स तक रेंज है. दैट इज व्हाई इट इज अ शॉर्ट रेंज ballistic missile system. Okay, so the answer for the same is surface to surface missile and that too SRBM, that is short range ballistic missile. तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे. और ये जो डेवलप की गई है, दिस हैज बीन डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम IGMDP भी बोलते हैं. और ये जो IGMDP है, ये किसके अंडर आता है? दिस इज एक्चुअली अंडर DRDO. So basically developed by DRDO under the program that is integrated guided missile development program. ठीक है, so ये सारी चीजें आप याद रखेंगे related to Prithvi 2. The next question is consider the following statements regarding Supply Chain Resilience Initiative, which is also known as SCRI. As we have seen that during COVID-19 and trade tension that has been between China and United States of America, there has been a lot of disruptions which has threatened the supply chain. Supply chain means be it goods
or be it services. So the supply chain for the same has been affected a lot. So Japan has started with this initiative, which we also term as SCRI, and it has been a trilateral approach. Trilateral approach means there have been total three countries that have been included in it for current status. That is Japan, India, and Australia. Okay, these are the three nations that are there. Now, when we talk about why has this thing started, the main aim is to reduce any kind of dependency on a single nation. And which is the single nation here? The single nation here is China. Okay, and as we know that India has been a part of this initiative, the reason for the same is that we have recently seen that India has banned a lot of apps from China. Also, India is trying to be self reliant. How is it doing that? By starting with Make in India initiative and various other parts. So, this will actually attract a lot of FDI towards India, that is foreign direct investment, and hence SCRI will be a great approach for India. Now, talking about the points that have been discussed in this question, the first one is that it is an initiative decided by India, Japan, and Australia to achieve supply chain resilience in Indo-Pacific region. Please remember, Indo-Pacific region है, इसको भी star mark कर लेना. जो आपका first statement है, that is completely right. The second one is that the idea is to reduce the reliance on China for supply of goods and services. This is also completely right. Recently हमने discuss की है ये बात. So which of the above statements are correct? So the answer for the same will be C, that is both 1 and 2. The next question is Fifi, which was recently seen in news, is a mascot released for which famous sports event? As you know that mascot questions are favorite or that of CDS examination. पक्का mascot का question पूछा ही जाता है examination में CDS में. So when we talk about Fifi, it is mascot for Asian Paralympic Games, and this is the fourth edition of this Asian Youth Paralympic Games. Talking about Fifi, Fi means flying bird, and first fee stands for inclusiveness of human society, and second fee stands for mental strength of athletes. So this mascot has been inspired by the bird motif, which is there in Langzhou culture. And if we talk about the Asian Paralympic Games, these are going to be held in China, that too in Hangzhou, China, and it will be held in 2022. ठीक है, so जितनी information बताई है related to this game or related to this particular mascot, you need to remember all of this. Now, before moving further, I would like to tell you that we have released FCAT 1 2021 crash course. We have very limited seats available for the same. If you want to enroll for the same, please make sure that you go and download Insight SSB app. This link for the same is available in the description box, and the batch is starting on 18th of January. All the four subjects will be covered holistically, and only the important areas जहां से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही एरियाज कवर होंगे. एज यू मस्ट हैव सीन कि प्रीवियस ईयर ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं आजकल एफकैट में. द रीजन फॉर द सेम इज कि मैथ्स का ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो रहा है. द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पहले आते थे दे वर वेरी सिंपल, एंड नाउ द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर कमिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो जितने भी टाइप्स हैं क्वेश्चन के वो सब हम कवर करवाएंगे आपके. टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, आप एसएससी लेवल रीजनिंग प्रिपेयर करने लग जाते हो, दैट इज नॉट द रीजनिंग दैट कम इन एग्जामिनेशन. 32 क्वेश्चन तो डायरेक्टली रीजनिंग के आते हैं. दैट इज वेरी इजी टू स्कोर, एंड कौन से एरियाज आते हैं, कैसे कवर करते हैं, दैट वी विल डील विद. ओके, टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर वी हैव रिलीज द स्टैटिक वीडियो, एंड उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम जस्ट 25 मिनट्स वीडियो. ठीक है, सो वी नो कहां से क्वेश्चंस आते हैं और वो सब कुछ हम आपका कवर कराएंगे. सो इफ यू वांट टू स्कोर विद अ स्ट्रैटेजी, you want to score at least 175 marks in 1 month, you can go for this course. I can guarantee you one thing, that आपके आराम से marks आएंगे, because we know from where you need to study, because strategy इस point and time पे सबसे ज्यादा जरूरी है. So please make sure that you go and download this app and you go for this course. I guarantee you this particular thing कि अगर आपने पहले से कुछ preparation कर रखी है तो 200 plus marks आपको बहुत आराम से मिलेंगे. अगर नहीं करी है, it's okay, 1 month is there, you can score around 170 to 175 marks. You can clear the cutoff very easily with a strategy, and prepare with us. I guarantee you very good score this time. Along with preparing with strategy, one more thing is there, that you'll get live doubt sessions. आपको assignment दिए जाएंगे जो बहुत specifically designed है FCAT examination के according, और उसके बाद आपके live doubt sessions होंगे. That will help you in clearing your doubts related to that. ठीक है, assignment और जो test series है ये आपको best help करेगी to analyze your performance. So इस course के अंदर ना ही सिर्फ आपको
मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है बल्कि टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जा रही है एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस. Hence you can go for it. Okay, now moving forward with the questions. Which state has passed an ordinance to ban unlawful religious conversions for the marriages? So we have seen that in inter-religion marriages, there is an undue pressure, usually on the girl's side, to change their religion for the sake of marriage. So if any such undue pressure is created by any of the families, it is considered to be an offense, and this offense is non-bailable. मतलब इस offense के बाद you won't even get a bail. ठीक है, you're not eligible for bail, so it is a non-bailable offense. Talking about imprisonment, it is of almost 10 years. That is the maximum imprisonment you can get under this particular law. Also, the penalty is put down, and the penalty for the same is 50,000 rupees. So this is the condition and this ordinance to make this law. Okay, so ordinance जो होती है वो pass की जाती है, as you all know. Ordinance जो है, this is usually passed either by the parliament, or if it is a state government, then state legislature usually passes it out. So ordinance जो है वो pass की गई है, and under this ordinance these particular laws will be made. ठीक है, एंड कौन सी गवर्नमेंट ने पास करी है? इट इज एक्चुअली उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हु हैज पास दिस ऑर्डिनेंस अगेंस्ट अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स. Next question is India's largest hockey stadium is planned to be set up in which state? So the answer for the same is B, Odisha. In Odisha, Rourkela is the area where it is being made, and there are chances that it will host men's hockey World Cup that is to be held in India in 2023. So men's hockey World Cup को भी 2023 में host करने के chances है कि वो इसी hockey stadium में host किया जाएगा. The next question is which country's naval ship Arawat reached Port Sudan under Mission Sagar 2? So इससे पहले हमने CDS2 2020 series के अंदर मिशन सागर की भी बात की थी. That was the first phase of it. तो आप मुझे एक तो बताएंगे मिशन सागर के अंदर कौन कौन सी countries involved है. Second thing that you will tell me is that सागर की जो full form है वो क्या है? Okay. Now, talking about CDS2 2020 series, it is also very, very important because certain months are overlapping. So many questions can come out of it as well. I'm not covering or repeating the question that have been in CDS2 2020 series. So please make sure that you cover CDS2 2020 series as well. Now, coming to the question, the thing is that 4 nations have been involved in Mission Sagar 2 initiative. इसके अंडर 4 countries कौन-कौन सी है? Your Sudan, South Sudan, Eritrea, and Djibouti. These are the 4 nations. अब आप इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है. यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट. दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी. दे कैन आस्क अबाउट विच इज दिस स्ट्रेट. तो आप इसके बारे में याद रखेंगे कौन कौन सी कंट्री स्ट्रेट को के आसपास है, विच ओशन और विच सी इज देयर. ओके, so you need to remember all of these things. Also Africa में, because we are discussing about Africa, so Africa के अंडर आप ये देख सकते हैं कौन सी nations जो हैं उसके थ्रू इक्वेटर पास आउट होती है, या और भी कोई अगर इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो कौन कौन सी नेशन से पास होती हैं. दिस इज योर होमवर्क. आप इसको इस तरीके से प्लीज एक बार पढ़ लेना. देयर आर चांसेस दैट इट मे कम लाइक दिस इन ज्योग्राफी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मिशन सागर, it has been launched by India and it is an initiative to provide assistance to friendly countries. प्लीज ध्यान रखना कि फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उनके लिए ही ये एक इनिशिएटिव है, और ये 2 चीजों के टाइम पे दिया जाएगा. द फर्स्ट, इफ देयर इज एनी नेचुरल कैलामिटी, और सेकंड थिंग ड्यूरिंग कोविड-19. ठीक है, सो कोविड-19 के टाइम पे इफ एनी कंट्री नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, बी इट मेडिसिन, फूड सप्लाई एटसेट्रा, इट विल बी गिवन. और द फर्स्ट वन इज एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी, बी इट अर्थक्वेक, बी इट cyclone, whatever comes the way, of course India will help under Mission Sagar. So Mission Sagar 2 जो है उसमें कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है? 4 countries है, सुडान, साउथ सुडान, एरिट्रिया एंड जिबूटी. ठीक है, एंड इसमें कौन सी शिप इन्वॉल्व रही है? दैट इज अरावत. ओके, और इसके अंडर 100 टन ऑफ फूड एड दी गई है टू ऑल दीज 4 nations. The next question is India Energy Modeling Forum that has been recently seen in news is a joint initiative of whom? So when we talk about India Energy Modeling Forum, ये jointly launch किया गया है by नीति आयोग along with USAID. USAID जो है that stands for United States Agency for International Development. ठीक है, तो नीति आयोग किसका है? It is of India. And USAID किसका है? United States of America. ठीक है, so the answer for the same will be Indian and
यूएसए। ठीक है, सो आंसर विल बी बी फॉर द सेम। टॉकिंग अबाउट एनर्जी मॉडलिंग या फिर एनर्जी सिस्टम मॉडलिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंडर कंप्यूटर मॉडल्स बनाए जाते हैं किसी भी एनर्जी सिस्टम के। सो फॉर एग्जांपल देयर इज वन एनर्जी सिस्टम, ठीक है, इसका मॉडल बनाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और इस कंप्यूटर सिस्टम को जो है एनालाइज किया जाएगा सो एज टू फाइंड आउट कि विच एवर एनर्जी सिस्टम हैज बीन मेड वो कितना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड और नॉट। सो फॉर द वेरी सेम थिंग मॉडल इज क्रिएटेड यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर एनी एनर्जी सिस्टम। ओके, एंड this is analyzed and finally it is found out that it is usable or not. ठीक है, so if this comes into the examination you should know that India Energy Modeling Forum जो है, this is a joint initiative between India and US. International relations में India US की जितनी भी major dealings होती हैं बहुत important है, काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। there have been lot of deals between USA and India. For example, Comcasa जो है हमने डिस्कस किया था, Lamoa डिस्कस किया था. So please in case you have not been through तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेना. It must be in part 4 वाली जो वीडियो है हमारी, उसमें वो अवेलेबल होगा. So anything that comes related to international relationship between India and USA gets important, and that's why this is also a very important question. The next question is, who amongst the following are listed as particularly vulnerable tribal group in Andaman and Nicobar Islands? Now letting you know that there are two very important topics. इस question के through मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ that firstly जो आपके tribals हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ट्राइबल, ठीक है, जितनी भी कम्युनिटी है वेरी इंपॉर्टेंट। दे डायरेक्टली आस्क यू अ क्वेश्चन कि ये वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कौन सी एरिया से इन्वॉल्व है, जैसे कि क्या ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है या ये नीलगिरीज के अंदर है, कहां पर है ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है। सेकंड जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज रिलेटेड टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इससे 100% क्वेश्चन आता है, या तो कुछ करंट रिलेटेड आएगा, जैसे कि इस साल आया था जो आपका CS2 2020 वाला क्वेश्चन पेपर आया था, उसके अंदर यू मस्ट हैव सीन करंट रिलेटेड आया था। सेकंड जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ज्योग्राफी रिलेटेड, दैट इज आपको एटलस पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। एटलस के थ्रू यू कैन फाइंड आउट कि लिटिल निकोबार है या फिर आपके जो बेसिक आइलैंड्स हैं और उसके बीच में चैनल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कोई नई चीज रिलीज की गई है बाय आर्मी, बिकॉज वो अब काफी ज्यादा एक ऐसा प्रोमिनेंट एरिया बन रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहां पर हम अपनी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, अपनी डिफेंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं। कुछ भी ऐसी चीज हो रही है करंट रिलेटेड, आपको अच्छे से पढ़नी है ये दो चीजें। ठीक है, सो प्लीज आप इन दो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ट्राइबल्स को आप गूगल कर लीजिएगा, एंड अंडमान और जो निकोबार आइलैंड्स है इसको आप एटलस के थ्रू पढ़िएगा। वट एवर इज हैपनिंग इन करंट वो तो मैं आपका कवर करा ही दूंगी, नॉट अ वेरी बिग इशू। ठीक है, now coming to the question, they have given us the 4 tribal groups. Okay, now just letting you know that अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करते हैं, अंडमान आइलैंड जो है इसमें टोटल 4 नेग्रीटो ट्राइब्स हैं। now which are these 4 जो आपके नेग्रीटो ट्राइब्स हैं? the first one is ग्रेट अंडमानीज, second is ओंगे, third is जरावा, and the fourth one is सेंटिनलीज। ठीक है, सेंटिनलीज तो यहीं पर है आपका। तो ये 4 जो ट्राइब है ये अंडमान के 4 नेग्रीटो ट्राइब्स हैं, और निकोबार जो आपका है इसके अंदर आपके टोटल 2 मोंगोलॉइड ट्राइब्स हैं। ठीक है, मोंगोलॉइड ट्राइब्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज शोम्पेन एंड द सेकेंड वन इज निकोबारीज। ठीक है, निकोबारीज और शोम्पेन जो है ये आपके 2 ट्राइब्स। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से ट्राइब्स है। ऑफ कोर्स आई हैव डिस्कस्ड जरावा इज देयर, सेंटिनलीज इज देयर और शोम्पेन इज देयर। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, दैट इज सी। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट तोड़ा, तोड़ा जो ट्राइब्स है ये द्रविडियन एथनिक ग्रुप है जो कि नीलगिरी माउंटेन्स में फाउंड किया जाता है। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अश्योरिटी हियर कि ये वाले जो क्वेश्चन है इस टाइप के आते ही आते हैं, तो ट्राइबल और अंडमान निकोबार आइलैंड आप अच्छे से कवर करेंगे, आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो यहीं से फिक्स हो जाएंगे। ओके, now coming to the last question, what is the name of communication satellite that was launched by ISRO, that is Indian Space Research Organization? So this communication satellite was formerly known as GSAT 12R. The answer for the same is B, CMS-01, formerly which was known as GSAT 12R. So this was launched on December 17, 2020 from Satish Dhawan Space Center. Now where is Satish Dhawan Space Center? It is at Sriharikota. ठीक है, सो आपको ये भी याद रखना है कि फ्रॉम वेयर इट वाज लॉन्च्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सैटेलाइट, इट वाज लॉन्च्ड बाय PSLV C50, which is 52nd flight of this particular PSLV. Talking about CMS-01,
This is a satellite which is a communication satellite and will provide services to Indian mainland. Talking about Indian mainland, it includes Andaman and Nicobar Islands and योर लक्षद्वीप आइलैंड्स ओके. अब ये बात आप याद रखेंगे बिकॉज ये अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. CMS-01 which was launched from Sriharikota December 17, 2020. Now, with this, we end the part 5 of the series. Please make sure that you're watching all the series, and I'm again pointing that please make sure that you also go through CDS2 2020 series as it is very, very important. There are major areas which are covered in that also. The reason for the same is that certain months of current affairs are overlapping. So, आपको CDS2 2020 series भी complete करनी है along with CDS1 2021 series. Please make sure that you like this video if you feel that the content is useful for you, and subscribe if you haven't already. Share it with n number of your friends who are preparing for CDS, as this video will be very, very beneficial for all of them. Keep working hard, keep studying hard, and I'm sure that you'll make it to the list.